In the name of Allah, the most merciful, most gracious, and most beneficent. Prophet Muhammad said, peace and blessings of Allah be upon him. One who is not merciful to others will not be treated as mercifully. Now today I will deliver another lecture for class 10th, chapter Our Environment, and today's topic is ecosystem. Ecosystem. Now, how can you define ecosystem? This is very important question from the examination point of view. Ecosystem. Ecosystem go kya? Ecosystem ch relationship between biotic community and abiotic environment. The relationship between biotic community and abiotic environment is called ecosystem. Okay. The term ecosystem was given by Tennessee. Ecosystem is the structural and functional unit of biosphere. Okay. Ecosystem क्या हो? यस्य कुंती जाय कह biological community, living thing and his community कुंज अमिस environment सच अमिस अख link develop यानी अमिस environmental impact पेवन अमिस light हुंद impact पेवन temperature impact पेवन बाकिन factor हुंद impact पेवन in the life पे you see relationship exist गया between this biological community या biotic community with the non-living environment या abiotic environment. This is called ecosystem. Okay. The ecosystem term, this a scientist and this now Tennessee and this term ecosystem. तो ये ecosystem आप करा देना structural and functional unit of biosphere. Okay. Now today we will discuss it as components of ecosystem. Shabash. Components of ecosystem. In a matrix sheet 4 number wol sawal yaman, what is ecosystem, what are its components? Yes. Why sawal ecosystem is an odam chak scientist odam. So is daban ecosystem is z component. Ago abiotic component, bago biotic component. Odam suggested that ecosystem has two components. Ecosystem is the component. Our abiotic components, the biotic component. Abiotic component and biotic component. Okay. So let us take these one by one. Abiotic and biotic. Abiotic component. Abiotic component क्या होगा? Abiotic component, as the name indicates, abiotic component means non-living component. यम ते non-living component ecosystem मस आसन, तथ पे नाम abiotic components. They are non-living components. Non-living components of
ecosystem. Ecosystems manz chi yim non living components asan. Won so yim abiotic component kus ecosystems manz. Yim cha asan 3 qismik. There are 3 types. Yim cha 3 qismik asan abiotic components. Godnukui component tulo bais tim gay inorganic substances. Inorganic substances. Inorganic substances manz kus shu. They include carbon, nitrogen, oxygen, calcium, phosphorus, and their molecules. So water, carbon dioxide. Okay, these are inorganic. The yim they exist in free or combined state. Yani yim free form asan या combined form मज चाहे water body आसन चाहे airस मज आसन यम free या combined form मज यम components गो ये गो component यानी abiotic. ओके तो दोयम कैसा गो ब्याख तिम गई organic substances. Organic substances. यम जन organic substances आसन they include Yes, carbohydrates. Yes, proteins. Yes, lipids. Nucleic acids. Any DNA, RNA. That's it. In just organic substances. तो वही सवाल यम कम ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस यम लिविंग थिंगन मज या डेड बॉडीज दे आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स यम लिविंग थिंगन मज या वनो डेड बॉडीज मज या वनो डेड बॉडीज. ओके दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस. अत जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स DNA RNA यम लिविंग थिंगन मज या डेड बॉडीजन मज डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो नंबर नेक्स्ट कंपोनेंट तिम गई क्लाइमेटिक फैक्टर्स. क्लाइमेटिक फैक्टर्स यम तिम एबायोटिक तथ मज दे इंक्लूड अत मज कम अत मज ये लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड रेनफॉल एंड एडिफिक फैक्टर्स. एडिफिक फैक्टर मज सॉइल टोपोग्राफी सॉइल टेक्सचर soil pH all this come under climatic factors. यानी light temperature humidity rainfall wind basically edific factors means factors related with soil has topography soil texture soil pH all these come under yes abiotic factors. Okay यानी कि these climatic factors are also abiotic. शाबाश. तो आज पर कैसा को दोयम तुम गए biotic factors. Biotic factors. As the name indicates, yeah, biotic components. Biotic components. Biotic components of ecosystem. Ecosystem में कुछ biotic component. Biotic means living component. Living components. They are
living components of ecosystem. Living component आसान ecosystems. They are living components of ecosystem. One सवाल आसपास कुछ biotic animals, आसपास plants, animals, the microorganisms. For example, plants, animals, microorganisms, all these come under biotic components of an ecosystem. Okay. Shabash. One सवाल इन biotic component यमन तश त्रे किस्म. They are of three types. त्रे किस्म च biotic component. गोडनुक किस्म को तिमन producers. Producers are component. Producers क्या गई? Producer गई तिम यमन पान गुजा पाने करें तैयार from the raw materials. They prepare their own food themselves from the raw materials. They prepare their own food from raw materials themselves. Im panan guza pan karan ta. They be naam producers. Ya much mana byak na autotrophs. Yum panan guza pan karan ta. Okay. Atmos kush atmos green plant. Tamam green plant in they come under producers. Yani men im panan guza pan karan ta yaar. Ta panni khulti karan istemal ta bakin ta din. Goya akh component. So doyum type chat tim gay consumers. Consumers as the name indicates. Im jin panunguza pan karan tayar ki balkishim consume karan food from the producers. Yus producer and gaza is banamut suishim istimal karan. They do not prepare their own food. They do not prepare their own food, but consume food. Im food karan consume from producers. Yus producer and gaza is banamut suishim karan consume. Im pe now consumers. Okay. For example, all animals. Tamam animals consumers. Ya पंजे इमजे consumers. Chatting. Okay. The one सवाल इम consumer. Consumer and further that type. Consumers are of further three types. Consumer and further that type. Consumers. Shabash. Consumer and further that type near consumers. Ak type ko herbivores. Beago carnivores. The beago omnivores. Okay. Herbivores, carnivores and omnivorous animals. Herbivores क्या है? They feed on plants. ये plants क्या? Directly. ये माना herbivores. Okay. For example, cattle. Cattle च घास क्या? Okay. They are herbivores, plant eaters. Carnivores go. They feed on flesh or meat. या मांस क्या? For example, lion, tiger, leopard. यम carnivorous animals. यानी यम सिर्फ मांस क्या? गो लिहाजा कर यम ति indirectly
मतलब प्रोड्यूसर पे गजा कर हासिल मगर प्रोड्यूसर खो गोड कम तम हर्बिवोरस तो हर्बिवोरस पे फीडिंग कर कार्निवोरस एनिमल्स ओके लायन टाइगर लीपार्ड दीज आर कार्निवोरस एनिमल्स ओके तो वह सवाल omnivorous क्या गो omnivorous they feed on both plants and flesh यम मांस तक इस्तेमाल तो प्लांट्स तक इस्तेमाल छा ठीक तम गई omnivorous animals for example man dog bear dog man यम मतलब कुल कट तक इस्तेमाल तो मीट तक इस्तेमाल यानी मांस तवान तो सब्जी तक इस्तेमाल ओके गो वी आर omnivorous animals ये वन मे कंज्यूमर टाइप यानी कि मैं वन तुम बायोटिक कंपोनेंट त्रे कस्म अख प्रोड्यूसर्स बे गई कंज्यूमर्स तो बे गई डिकम्पोजर्स तो वह वन मे कंज्यूमर फर्दर त्रे टाइप अ गई हर्बिवोरस कार्निवोरस एंड omnivorous animal तो नेक्स्ट एंड लास्ट सो गो डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स क्या गई यम गई तम ऑर्गेनिजम्स यम डिकम्पोज करें क्या dead bodies they decompose they decompose complex substances into simpler ones यम body करें decompose body में यम complex substances आसान तिमन ब्रेक करें into simple substances डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर यह डेड बॉडीज या डेड मटीरियल ओके वो सवाल यह डिकम्पोजर फॉर एग्जाम्पल अत बैक्टीरिया तो बे फंजी बैक्टीरिया एंड फंजी दे आर डिकम्पोजर्स ओके शाबाश वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैट्रिक्स स्टैंडर्ड्स मन सो रोल ऑफ डिकम्पोजर्स in an ecosystem decomposer क्या रोल कर इकोसिस्टमस मं ओके गोडनिक पॉइंट कर गोड दे decompose dead remains they decompose या dispose dead remains of living things is a living organism man dead remains तथम decompose करन या dispose of करन नंबर 2 करन they maintain fertility of soil यम soil his fertility maintain वन केटल डंग निवान सह त्रो जमीनस मज अतन या यह केटल डंग थवान गोड कुन जाय यम डिकम्पोजर डिकम्पोज कर तो पे त्रावान जमीनस मज अम फर्टिलिटी बढ़ान जमीन ओके बे दे हेल्प इन द recycling of nutrients यम डिकम्पोजर्स कर recycling of nutrients गो न्यूट्रिएंट ये बॉडी गई डिकम्पोज तो बॉडी मज न्यूट्रिएंट पे डिकम्पोजर यह सिंपल फॉर्म मज अनान तो सह बी गसान वापस यह एनवायरमेंटस मज तथ रिसाइकलिंग तो अत मदद ब्याह पॉइंट लिखो दे कन्वर्ट nutrients into usable form nutrient usable form मज अनान ये nutrient usable form मज यह तेली डिकम्पोजर गोड डिकम्पोज करें बॉडी डिकम्पोज करें डेड मटीरियल ओके तो लिहाजा कर ब्याह पॉइंट लिखो दे मेंटेन
they maintain ecological balance. Ecological balance in biosphere. Biosphere means ecological balance करने तर maintain. Okay. बलिहाल कहते तो याद यम decomposer क्या काम कारश करन यम चे dispose of करन dead remains of living things. यम चे fertility of soil इजन चे सच करने maintain. Okay. बीशियम इजन nutrient अनहंस चे recycling गसन चे. You might have read this question in class 9th biogeochemical cycling. That much role current decomposer. Agar decomposer है still gets recycling की. तो बीशियम nutrient and usable forms आना. तो लिहाजा करें चीम ecological balance current maintain in an ecosystem in a biosphere. Okay. So this was my today's lecture about components of ecosystem. So inshallah tomorrow we will discuss types of ecosystem. Types. Okay, thank you. Thank you very much.